Om Shanti. Is my voice clear and audible? All right. Okay. All right. Thank you so much. So we'll begin with a short meditation. Just sit back and relax. Withdraw your attention from the outside world and bring it to yourself. Come in the present moment. Be aware of where you are and who you are. For a few moments, just experience that you are alone in this world. No baggage, no burden, doing the most important thing, healing yourself. Focus at the center of your forehead and feel that you are a divine light, shining like a star. Feel that I am enough for myself. I accept myself. I love myself for who I am. I see my weakness, but I accept them. I embrace them. I don't want acceptance, acknowledgement, appreciation from people. I appreciate my journey, my progress. I respect myself. Being compassionate to myself is my natural state of being. I forgive myself for all the mistakes I made when I was unaware. I am a loveful being. Being loving is my virtue. I experience an ocean of love within myself and I radiate into everyone around me. Shanti.
Om Shanti. How's everyone doing today? Am I clear and audible? Shanti. Okay. All right. Thank you. Okay, that's good. All right. So today we're going to continue with chapter 6, Stress No More. So I'll just share the screen with you. Give me a moment. All right. Is the screen visible to everyone? Okay. All right. Thank you. Okay, so we're going to begin from the science of stress. Even 25 to 30 years ago, people faced several challenges. Yet no one said, I feel stressed. Stress was just a term explained in physics textbooks and classrooms. It was not a part of conversations to refer to the state of mind. तो पहले ये वर्ड कभी सुना ही नहीं था स्ट्रेस. आजकल तो एवरी अदर सेंटेंस में होता है कि इस बात का स्ट्रेस हो रहा है, इस बात का स्ट्रेस हो रहा है. Today, most of us like to say, I am stressed. We feel that it conveys that we are busy, we are going the extra mile, and we are more successful. In other words, sometimes we wield the word stress as a status symbol. Unfortunately, society today has too many people competing to see who is more stressed. Nowadays, Sister Shivani is saying it's become like a status symbol कि जो ज़्यादा बोलेगा कि मैं stressed हूँ, मुझे इतना stress है, काम का pressure है, उससे दिखेगा कि वो ज़्यादा successful है. The word stress is often used interchangeably with pressure. For example, a target or deadline at office is a pressure on us, but we wrongly term it as work stress. An exam is a pressure on us, but we wrongly call it exam stress. तो है एक्चुअली तो प्रेशर होता है बट हम स्ट्रेस वर्ड यूज करते हैं. जैसे एग्जाम का स्ट्रेस, कोई डेडलाइन आ गई तो उसका प्रेशर है बट वी से स्ट्रेस है. Okay, so the formula for stress is stress equals pressure divided by resilience, where numerator pressure equals external situations like pandemics, exams, targets, health, goals, money, job, loss, time, traffic, relationships, weather, and so on. Pressure refers to the situations coming to us. Pressure is an external factor that is not always under our control. Today, pressures have increased. There are more changes in the education system, work culture, expectations in relationships, lifestyle, social conditioning, and so on. So, in today's day and age, Shivani saying pressure has increased क्योंकि जो हमारे expectations हैं, जो the lifestyle we have, the work culture, social pressures, ये सब इन सब से pressure has increased. The denominator resilience equals our inner strength, including our consciousness, perspective, thoughts, feelings, words, actions, qualities, values, and principles. Resilience is our inner power to face pressure.
इम्पोर्टेंट है, resilience का मतलब बताया है, is our inner power to face pressure. We are the creators of our resilience and it is always under our control. Under any situation, 10% depends upon the pressure and 90% depends upon our resilience. So ये important है resilience. The 10% depends upon the pressure. So 10% is जो outside के situations हैं, which are not in our control. But 90% is in our control, is our inner power, which is resilience. Therefore, stress is equal to our situation divided by our inner strength. So in simple terms, it is situations divided by inner strength. Stress is not caused because of increased pressure. It is caused by reduced resilience. And this is important. It is not caused because of increased pressure. It is caused by reduced resilience. Our lifestyle has also been feeding stress. Many of us are only too familiar with these habits that are reducing resilience. Sleep deprivation, junk food consumption, plugging into technology constantly, too much screen time, toxic content consumption, and emotional adjustment issues. In the process, we have ignored powerful practices like spiritual study and meditation. तो ये बहुत important सिस्टर शिवानी कह रहे हैं कि हम we are feeding onto the pressure. अब और हमें ये सब इन सब बातों का आइडिया ही नहीं है कि जो हम जैसे स्लीप की डेप्रिवेशन होती है, नींद नहीं आती, जो हम जंक फूड खाते हैं, जो हम ये इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हैं, जो हम टीवी पे जो भी हम कंटेंट कंज्यूम करते हैं, दैट ऑल इज फीडिंग टू आवर स्ट्रेस. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है रियलाइज करना कि what is the content that we are consuming, what is the food intake. ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है और इन सब में हम जो मेन पावरफुल प्रैक्टिसेस हैं स्पिरिचुअल स्टडी एंड मेडिटेशन, इस बारे में तो मेजोरिटी हम सोचते ही नहीं है और फिर कहते हैं कि स्ट्रेस होता है. बट वी नीड टू बी वेरी केयरफुल कि हम क्या कंटेंट लेते हैं, हम क्या कंज्यूम करते हैं इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी सी, इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी ईट, in terms of what we listen to, इधर उधर की बातें जब gossip होती है, all that feeds onto our stress and reduces the resilience. Your ability to bounce back. Okay. Consider the cycle of seasons. If it is summer today, in a few months it will be monsoon. We will not just sit at home saying it is raining. We say, never mind if it rains. I am ready with my raincoat and umbrella. We protect ourselves and do not blame the weather. Likewise, we need to learn the mechanism of protecting our emotional state from adversities by becoming resilient. तो जब बारिश आती है हम घर पे तो नहीं बैठते ये कह के कि बारिश आ रही है अब कुछ कर नहीं सकते. वी जस्ट वेयर आवर रेनकोट और हम जाते हैं बाहर. तो whenever there's a situation that is compared to raining, कि जब कोई बारिश आ रही है, there's a situation, you just open your umbrella. तो you just emotional अपना resilience power, अपनी inner strength को मतलब सामने लाओ. Pressures certainly do not seem to be abating. They are only going to increase. Pressures तो कम होने नहीं वाले, बढ़ने ही वाले. Let us not become so focused on controlling the pressures that we do not seem to have the time to enhance our resilience. तो होता ये है कि कोई प्रेशर आता है, हम उस सिचुएशन में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, उससे
उसके बजाय if we start working on our resilience, हमारे inner power को बढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी है, because situations are not in our control, but the inner strength is in our control. So it's important कि हम वो inner strength बढ़ाएं rather than focusing too much on the outside situations. Resilience is like a muscle that we can develop and strengthen rather than a quality we are born with. Suppose an employee is given a deadline of 24 hours to complete his project report. It is a target or pressure. It is important to set targets because otherwise he might take 4 days to finish it. But the minute he is told, complete this by tomorrow evening, he starts panicking. Suppose he starts creating these thoughts. This is scary. How will I finish the report by tomorrow evening? If I do not complete this task in time, how will my future in this company look? My report was not up to the mark last time. I better do a good job now. तो सबसे पहले कोई ऐसा वो होता है ऑफिस में कोई डेडलाइन आती है तो सबसे पहले हमारे माइंड में यही थॉट्स आते हैं कि ओ गॉड अब ये कैसे होगा कंप्लीट ऑल दिस नेगेटिव थिंकिंग स्टार्ट दिस मीन्स ही इज वर्किंग ऑन द टास्क विद अ स्ट्रेस्ड माइंड suppose his teammate is also asked to prepare a report independently with the same deadline and she thinks I am focused. I can do anything I decide to do. I will certainly complete this task by tomorrow evening. This will be my best presentation till date. तो ये सब बातें हमें अपने आप को सिखानी है more like कि ये affirmations हमें करने हैं. This means she starts off with faith and determination. Both will eventually complete the report, which means both will reach the destination, but their journeys will be different. One will reach there creating stress because of negative thoughts, the other will reach with stability because of powerful thoughts. So, the next topic is 7 life skills to beat stress. We are supposed to build immunity by following a good diet and exercising every single day. It is never going to be enough if we start eating healthy and exercise on the day that we fall ill. तो जिस दिन हम बीमार पड़ गए उस दिन अगर हमने हेल्दी खाना शुरू किया और सोचा कि अब एक्सरसाइज अभी शुरू करूंगी that is not going to help. It will eventually, but it will take a lot of hard work. Resilience works in the same way. We need to build it systematically daily, not once a week, and not only when time permits. It cannot be created overnight by sitting in meditation or creating affirmations on the day an adversity strikes. Here are 7 skills that increase your resilience every day. They create an inner shift in your ways of being, ways of thinking, and ways of living. So it's just by, one night से नहीं होगा. It takes months and months to build up that resilience. जब हम dedicated होते हैं, determined होते हैं, when we sit in meditation, affirmations create करते हैं, जो हम ये daily book read कर रहे हैं, sessions attend कर रहे हैं, जो आप सब इतने beautifully रोज homework करते हैं, so inspiring to see. All this is building resilience. This is all the work that we have to do on ourselves. And ये आज का homework भी यही है, तो ये सब आप दोबारा पढ़ना. So these 7 life skills that is to increase your resilience. So you have to write all of this in your own words. So we'll read it now and then you read it again and write it in your own words. ये आपका homework भी है. So skill 1,
Write your story, not theirs. We are the script writers, directors, and actors of our movie of life. But throughout the day, when we watch or interact with others, we keep writing mental scripts of how they are, how they should be, and what they should do. तो ये होता है ना जब हम किसी से मिलते हैं, अगर किसी का बिहेवियर हमारी तरफ ठीक नहीं है, हम उनके बारे में सोचते रहते हैं, पर चिंतन जो कहते हैं बाबा. तो वी आर आवर ओन directors, script writers, and actors. So we have to focus on ourselves. In the process, we forget to sort, fix, or perfect our own roles. Thinking of someone else is an unnecessary pressure we put on ourselves. Our co-actors are responsible for their roles. They write their own scripts and follow them. Focus on perfecting your own performance. Focus on perfecting your own performance. Do not think about other people. Let your style and your personality of peace, love, and kindness reflect in every scene of your life. Let your style and your personality of peace, love, and kindness reflect in every scene of your life. Create what you enjoy watching. Even if other actors don't perform right, your performance can give them a cue to correct themselves. Remind yourself in every scene, I focus on my role, my script. I bring out my style of peace and power with right thoughts, pure words, and perfect behavior. अगर ये हम सातों लाइन भी रीड करके ना ये लिख लें, this as affirmations, as something to focus on. This will also help in building our resilience, building our inner strength and power. In every scene, I focus on my role. मैं अपने आप को देखता हूँ, मेरे अपने role को देखती हूँ. I bring out my style of peace and power with right thoughts, pure words, and perfect behavior. Skill 2, make acceptance natural. Co-actors clearly हुआ राघव बदन ने लिखा है, co-actors are the actors with us, you know. Everyone who is around us are our co-actors. जो हमारी फैमिली में है, हम जिनसे इंटरेक्ट करते हैं, हम सब लाइफ इट्स जस्ट अ ड्रामा चल रहा है ना, उसमें वी हैव टू बी द हीरो हीरोइन ऑफ आवर ओन लाइफ. वी हैव टू प्ले आवर रोल परफेक्टली. जो हमारे साथ है हमें उन्हें नहीं देखना, हमें अपने आप को ही देखना है. एंड वी अट्रैक्ट व्हाट वी आर, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है. So we have to perfect ourselves and not look at anyone else. That's what Sister Shivani is explaining. So the second skill is make acceptance natural. Okay. All of us hold a desire that the world should bend to our wants. And when it does not, we start whining or questioning the circumstance. We even dislike ourselves, our home, family, friends, or career in such moments. It means we do not go with the flow. We try to block or push away the reality in our thoughts and feelings. Most of our stress comes from this inner struggle to wrestle with the natural flow. Our stiff resistance becomes a barrier to peace. Besides, the act of resisting depletes inner power and creates stress. तो यहाँ पे हमें क्या करना है? क्या कह रहे सिस्टर शिवानी? आज का हमारा टॉपिक क्या है? जो 30 days of transformation का है. That is exactly what Sister Shivani is saying, acceptance. So we need to accept our situations and not try to question them or change them. जब हम
बहुत सोचते हैं ना कि हमारे आसपास जो हो रहा है, we we try to uh, block ourselves and push ourselves away from what the reality is. So it's very important acceptance, right? So that is our task also for today. Do not ask why, where, when, or how difficult experiences inevitably occur. Shift from asking what is this to accepting as this is it. So हमें change करना है what is this to this is it. When you surrender to the reality instead of resisting it, you conserve energy. This conserved energy can then be used to focus on solutions and new possibilities. तो जो हम जब हम रेजिस्टेंस हम क्रिएट करते हैं तो हमारी बहुत सी एनर्जी उसमें यूज होती है, तो वही कह रहे हैं कि सरेंडर, व्हाट इज सरेंडर, ये हमने पहले भी पढ़ा है. सरेंडरिंग इज एक्सेप्टिंग with no resistance, just accepting the situation without creating any resistance. तो उससे क्या होगा, काफी एनर्जी भी हम कंजर्व करेंगे, बचाएंगे, जो हम यूज कर लेते हैं सोचने में कि कैसे हम आउटसाइड सिनारियो को ठीक कर सकते हैं. This conserved energy can then be used to focus on solutions and new possibilities. Start with acceptance of people and situations and then influence them or empower them to change. तो जब हम acceptance create करेंगे ना, we we have the energy to empower others to change. Be open to newness and changes. Remind yourself, I accept whatever is happening. People and situations will be their way. I remain calm and influence them to change. जो भी हो रहा है, I have complete acceptance. People and situations will be their way. I remain calm and influence them to change. Skill 3, choose your words wisely. Words are the most powerful tools at our disposal, but they are often underrated. Many of us are in the habit of speaking far more than is necessary. Whether it is to ask, inform, explain, advise, convince, or impress, we tend to overthink and hence overspeak. तो तभी हम लोग कहते हैं ना ब्रह्मा कुमारीज में कि पहले कम सोचो, धीरे सोचो, फिर धीरे बोलो, क्योंकि कम ज्यादा सोचने से जो हम सोचते हैं वो हम बोलते हैं. This urge to speak does not leave the margin to choose our words carefully, add value, or speak pleasantly. It becomes difficult for us to connect with our inner peace. Excessive talking depletes our energy and eventually increases stress. Practice speaking less throughout your day. After a few weeks, begin to speak more softly. Observe your vocabulary and eliminate low energy or negative words. Gradually, your words will raise your vibrations, the vibrations of situations and of the people around you. You will be more at ease with yourself. Remind yourself, I speak less, speak softly, and speak sweetly. कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, आराम से बोलो, प्यार से बोलो, कम सोचो. ये सब हम फॉलो, मतलब बाबा कितनी बार मुरली में भी आती है ये बात. I create peace by choosing words that energize and empower. I create peace by choosing words that energize and empower. Skill 4, flip negative labels.
All through our life, people bombard us with labels of who we are or are not, based on our achievements, appearance, background, personality, or possession. Negative labels are risky because we come to believe them and accept those labels as our reality. When we repeat them over and over in our thoughts, our mind and body respond and start living by that label. तो जैसे अभी हमें कोई कुछ कहता है और हम वो अपने आप से वो नेगेटिव लेबल रिपीट करते रहेंगे, तो it will become our reality eventually. So it's very important to positive, give ourselves positive labels, positive affirmations. This causes us to feel bad or dislike ourselves. Nothing is more stressful than self hate. Nothing is more stressful than self hate. Review the labels you describe yourself with. Replace every single label, every single negative label with a pure, powerful, positive label. तो जब भी हमारे माइंड में हमारे थॉट्स में कोई नेगेटिविटी आती है, हमारे बिहेवियर में कभी कभी वो नेगेटिव आ जाता है, तो उसको क्विकली पॉजिटिव में कन्वर्ट करना. If you have called yourself a failure, write down the things you have succeeded in. Make them your vocabulary. Repeat them consistently for a few days until they stick and get reinforced as your truth. Feeling good about yourself is a huge step in experiencing peace. तो यहाँ पे सिस्टर शिवानी कह रही है, अगर कभी लगे कि भी इस चीज में हम फेल हो गए, तो टेक अ पेपर एंड राइट डाउन व्हाट यू सक्सीडेड इन, कि आपने कितनी चीजें अच्छी की हैं, आपने कितनी चीजों में आपने सक्सेस आपको मिली है. So that will help you in overcoming whatever whatever is bringing you down. Remind yourself, I label myself with only and only positive words. I am aware that my labels manifest my destiny. I label myself with only and only positive words. I am aware that my labels manifest my destiny. Skill 5. Listen to the tutor within. We take dozens of decisions every single day and at times struggle to discern right and wrong. तो दिन में हम इतने डिसीजंस लेते हैं, बट कहीं क्या सही है या गलत है, इस वी उसको वी नॉट एबल टू डिसर्न, वी आर नॉट एबल टू मेक आउट व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग. द डाउट एंड डिलिबरेशन कैन बिकम स्ट्रेसफुल. तो कई बार ऐसे होता है ना, हमारे माइंड में बहुत सारी थॉट्स चल रही है, बट हम नहीं मेक आउट कर पा रहे कि व्हाट इज गुड फॉर अस, हमें क्या करना चाहिए. Fortunately, we have all the answers we seek within us. Our innate wisdom, inner voice, intellect, intuition और gut feeling, जो हमारी soul voice होती है, जो हम कहते हैं ना हमारी gut feeling है, हमारी जो inner voice आ रही है. In the subconscious mind is always active and guides us correctly. We have all experienced our intuition at work. We say, I wish I had listened to my instincts, जो हमारी inner voice होती है. Or something tells me this is not good for me. All we need is to listen to it. Otherwise, our responses will be driven by the stored patterns of our old sanskars. Spend a few moments with yourself in silence every day. Introspect on the consequences of your actions before choosing your karma. So it's very important, अगर हमें कोई डिसीजन लेना है, हम थोड़ा साइलेंस में बैठे और उसके बारे में जो हमारी गट फीलिंग है, जो हमारी इनर कॉन्शियस, जो सोल की वॉइस है, जो आत्मा की आवाज है, उसको हम सुने, उसको हम फॉलो करें.
और वही सिस्टर शिवानी कह रहे हैं कि अगर हम अपनी सोल वॉइस को फॉलो कर रहे हैं, वी विल नॉट बी ड्रिवन बाय आवर ओल्ड संस्कार। फिर हम सोच समझ कर डिसीजन लेंगे, हमारे संस्कार का उस पर असर नहीं होगा. That is when you will hear the intuition. Do not doubt that inner voice, and do not fear any challenges that might come up after you execute your intuitive decision. तो हमेशा जो अंदर की आवाज होती है, जो जो हमारी सोल वॉइस होती है, उसको कभी भी उससे डरना नहीं है, उसको डाउट नहीं करना. Remember that your intuition always knows what is right for you. Remind yourself, I am intuitive. Each time I need to take a decision, I calm my mind and surrender to the wisdom within, and it always gives me the right answer. Each time I need to take a decision, I calm my mind and surrender to the wisdom within, and it always gives me the right answer. Step 6. Make trusteeship a lifestyle. We are bestowed with so much in life: body, relationships, achievements, material possessions, and natural resources. We are supposed to take care of them and use them as trustees. But somehow we assume ownership of everything that we have and become emotionally attached to them. Where there is attachment, there will be fear of losing. तो ये भी बहुत important है, to see everything as trustees. कुछ भी हमारा नहीं है, everything is temporary. तो fear of attachment नहीं होना चाहिए. Otherwise, there will be fear of losing. And where there is fear, there will be stress. Despite knowing that we will eventually lose all that we possess, we still cling on to them and hope to never part with anything. तो ये पता ही है कि ये सब टेम्पररी है, फिर भी हम अटैच हो जाते हैं चीजों से, लोगों से. तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि अटैचमेंट किसी से नहीं रखनी, कोई भी चीज से, किसी इंसान से नो अटैचमेंट. Practice a new consciousness. Instead of ownership, be a trustee. Change how you relate to whatever you feel attached to. A trustee knows that he is entrusted to manage someone else's asset. So, as a trustee, you can take better care because it would be caring without fear, possessiveness, or control. This will keep your mind at ease and relaxed. Remind yourself, I value and care for everything I have. I am not attached to or dependent on anything. I am fearless. I am a trustee. So remind yourself कि I value जो भी है मेरे पास, I value it. I'm grateful for it. But I am not attached or dependent on anything. I am fearless. I am a trustee. Skill 7. Transcend illusions about yourself. Self awareness is a precursor to emotional stamina. Unfortunately, many of us do not know our reality as souls, even after having lived for 30, 50, or 70 years. This is so true. जब भी knowledge मिली तब understanding हुई कि we are a soul. इससे पहले तो we were clueless. Even if we know, we keep identifying with the body and the labels of roles, positions, and achievements. So, yes, Sister Shivani is saying the importance of soul consciousness and not body consciousness. We first stress about gaining all of them and then stress about holding on to them. After all, how we perceive ourselves
influences how we see the world around us. Regaining the awareness of the self puts a lid on our illusions. Stabilizing the truth of the self, being a peaceful soul, helps us to recognize emotions like fear, anxiety, or pain, which can otherwise leave us stressed. So it's important that we constantly remind ourselves of who we are, constantly stay in that soul consciousness. You are a soul who is an embodiment of peace and power. Hold on to this truth so tightly that the awareness does not slip away while you keep acquiring possessions or positions in life. Roles, positions, and achievements certainly deserve your time and attention, but do not let them steer your way away from your real identity. तो जो हमें करना है लाइफ में उस पे अटेंशन देनी है, हमारा टाइम देना है, बट साथ ही साथ सोल कॉन्शियसनेस में रहना है, हमेशा याद रखना है who we actually are. Remind yourself, I am a soul, I am peace, I am love, I am power, I radiate peace and happiness. Stress triggers several other disturbing emotions that in turn lead to unpleasant consequences. Therefore, do not settle for managing or reducing stress. A little inner work is all it takes to eliminate it completely. Remember that shifting to a stress free life is easily achievable because it depends only on one person, yourself. Remember that shifting to a stress free life is easily achievable because it depends only on one person, yourself. Okay, so I think we've completed this chapter. Hanji. So we'll start with chapter 7 tomorrow, ego. Okay. ये भी बहुत important है. All right. So okay. So I would request everyone to put their cameras on and share uh, what they've learned today and today's takeaways. Okay. Okay. Priya sister. Hanji. Good evening, sister. My today's takeaway is thinking of someone else is an unnecessary pressure we put on ourselves. हमें खुद का ही इतना कुछ सोचने को है, दूसरे के बारे में सोच सोच के हम खुद पर ही प्रेशर और रखते हैं. और आई थिंक ये सारा मूल कारण शायद यही है जिस वजह से हमें उधर से शिफ्ट करना है अपने तरफ. एंड सेकेंड थिंग इज एक्सेसिव टॉकिंग. जो हम ज्यादा बात करते हैं ना, बात सही है, ये मैं भी रियलाइज करती हूँ कभी कभी जब हम ज्यादा बात करते हैं ना तो हम सोचना बंद कर देते हैं. तो दिस पॉइंट इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर मी. थैंक यू. Thank you, sister. Thank you so much for sharing. हाँ जी, जो पर चिंतन कहते हैं ना कि पर चिंतन नहीं करना और सोच के बोलना है, मीठा बोलना है, कम बोलना है. ये बार बार मुरली में भी बाबा कहते रहते हैं. दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट. हाँ जी. अनुराधा सिस्टर. ओम शांति. ओम शांति सिस्टर. ओम शांति. ओम शांति. टुडे शिवानी सिस्टर ने बहुत डिटेल स्ट्रेस के बारे में बताया कि स्ट्रेस क्यों होता है. तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है, स्ट्रेस इक्वल्स प्रेशर बाय रेसिलियंस. तो प्रेशर माना
अपने आप का जो कर्म है या कार्मिक अकाउंट्स है, और उसको सेटल करने के लिए आपके पास जो शक्ति है, अगर वो कम होगी तो ही आपको स्ट्रेस होगा। तो अगर आपको स्ट्रेस नहीं चाहिए तो आपको अपना रेजिलियंस बढ़ाना पड़ेगा। तो रेजिलियंस बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत सारे 7 बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं। तो ये रेजिलियंस इज नथिंग बट आपको अपने कार्मिक अकाउंट सेटल करने की शक्ति। और वी कैनॉट रिड्यूस आवर प्रेशर्स तो आएंगे ही, लाइक आपके कार्मिक अकाउंट्स तो आएंगे ही आपके सामने कि आपको टारगेट्स मिलेंगे। और हर चीज में टारगेट्स होते हैं, लेकिन आपको कैसा सोचना है उस हिसाब से आप उसको सेटल कर पाएंगे। अगर आप इट इज वेरी स्केरी, आई कैन नॉट कंप्लीट दिस टास्क ऑन टाइम, अगर आप ऐसे बोलेंगे तो आपको स्ट्रेस होगा, क्योंकि आप अपनी एनर्जी घटा दोगे। और ऐसे हम ब्लेम भी नहीं कर सकते कि बारिश का मौसम है तो मैं घर पे ही बैठी रहूंगी जब तक बारिश का मौसम खत्म ना हो जाए, ऐसे हम कह नहीं सकते। तो ये कार्मिक अकाउंट्स तो आएंगे ही। कार्मिक अकाउंट्स इज नथिंग बट your pressures in life. You have to bounce back. You shouldn't panic, and you should find your work way around it. And there are so many 7 skills. The first skill is focus on yourself. क्योंकि जब भी आप दूसरों के बारे में सोचना स्टार्ट करोगे या दूसरों को देखोगे तो आप अपनी एनर्जी घटा दोगे। तो पर चिंतन प्रदर्शन करना नहीं है। और फिर हम अपनी एनर्जी कैसे घटाते हैं, ये बहुत सारी चीजें बताए। जैसे कि अगर वी डोंट एक्सरसाइज, ईट हेल्दी, और हमारा स्केड्यूल नहीं, हम कभी भी सो रहे कभी भी उठ रहे, और it is not systematic, then we reduce our resilience power. This is the main reason why we are not able to do our uh, karmic accounts, I mean, settle our karmic pressures. And we need to first step is we need to focus on ourselves, and second is we need to accept everything. We shouldn't have stiff resistance, बिकॉज अगर आप रेजिस्ट करोगे तो आप अपनी एनर्जी और भी घटा दोगे। और बहुत सारे एफर्मेशंस दिए हैं उन्होंने जो लिखना होगा हर दिन, तभी आप इन स्ट्रेस को खत्म कर पाओगे। और फिर अपनी वोकैबुलरी अच्छी रखनी चाहिए कि वर्ड्स में भी वाइब्रेशंस होते हैं। वर्ड्स, अगर आप कोई भी ऐसे वर्ड्स निकाल वो बात करेंगे तो आप अपनी एनर्जी घटाओगे और लोगों की एनर्जी भी घटा दोगे। तो कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो और सोच के बोलो। ये मंत्र दिया है कि आप अपनी एनर्जी कैसे बढ़ा सकोगे। और फिर अपने आप के जो लेबल्स है वो आइडेंटिफाई करके फ्लिप करने हैं। और फिर इनर ट्यूटर इनर ट्यूटर बोले हैं कि आपका अपना डिसीजन मेकिंग पावर्स बढ़ाने हैं, तो आपको अपने ये जो अपने आप से बातें करने हैं वो एक दिन में नहीं होगा। वी नीड टू हैव मेडिटेशन। और ये उन्होंने कहा कि आज मैं अपना रेजिलियंस बढ़ा दूंगी तो आज का आज नहीं बढ़ेगा। जैसे एक दिन में कोई कुआं खोद के वी कांट गेट वाटर, वी नीड टू हैव प्रबंध पहले से करना पड़ेगा। और फिर ट्रस्टीशिप रखनी चाहिए। अगर आपको अटैचमेंट्स रखेंगे तो आपकी एनर्जी छीन लेगा। किसी भी चीज में आप अटैच रहेंगे, कोई भी पर्सन या कोई व्यक्ति वस्तु, तो वही आपके दिमाग में चलेगा और आपकी जो प्राण ऊर्जा है वो खत्म हो जाएगी। और फिर सोल कॉन्शियसनेस का प्रैक्टिस करना होता है। आई एम अ सोल, आई एम पीस, आई एम लव, आई एम पावर एंड आई रेडिएट पीस एंड हैप्पीनेस। ये सब सातों चीजों से आप अपनी रेजिलियंस बढ़ा सकेंगे, जिसके कारण आप अपने स्ट्रेस खत्म कर सकोगे और
अपने जो प्रेशर्स और कार्मिक अकाउंट्स है वो खुशी से खत्म कर पाओगे, सेटल कर पाओगे। थैंक यू। ओम शांति। ओके राघव ब्रदर, हाँ जी। Shanti sister, I'm ओम audible. शांति, हाँ जी, यस यू आर ऑडिबल। Today I have got a very known knowledge कि stress is equals to pressure upon resilience. ये मुझे first time पता चला. Even I didn't listen, I think on awakening with brahmakumaris. ये topic मैंने अभी तक नहीं सुना था कि stress is equals to pressure upon resilience. Resilience जो होती है वो शिवानी दीदी ने बताया कि वो inner power होती है और हमें अपनी inner power को increase करना है। और जितना हम अपनी इनर पावर को इंक्रीज करेंगे उतना हमारा प्रेशर भी क्या होगा, कम हो जाएगा। और दूसरी बात, एक एग्जाम्पल जो शिवानी दीदी हमेशा देती हैं कि 2 पर्सन्स हैं और दोनों फैमिलीज एक एक कार में हैं और हैदराबाद से बेंगलोर जा रहे हैं। और एक फैमिली बहुत, दोनों फैमिलीज बहुत ही इंजॉय करते हुए जा रहे हैं, सैंडविचेस हैं, म्यूजिक चल रहा है, गॉसिपिंग्स हो रही हैं। लेकिन एक फैमिली को थॉट आता है कि मैं रेस करूं उस वाली अदर बी कार से, और वो रेस करना स्टार्ट कर देता है। उसकी वाइफ कहती है, स्पाउस कहती है कि सैंडविच ले लीजिए, बट शी ही इग्नोर्स नो कि मुझे सैंडविच नहीं खाना और म्यूजिक भी बंद कर दो एंड आई हैव टू फोकस ऑन माय ड्राइविंग ओनली। एंड तो फिर उससे क्या क्या पता चलता है कि वो जो है मतलब जो मेल पर्सन है जो ड्राइव कर रहा है वो कितना स्ट्रेस में हो गया, टोटली पूरी फैमिली ही कितना स्ट्रेस में हो गई रेस करते हुए कि, और दोनों को एक ही डेस्टिनेशन पर रीच करना है, और जो दूसरी वाली कार में जो फैमिली है वो बहुत इजीली जा रही है। तो ऐसे ही जो अभी बुक में भी शिवानी दीदी ने जो वो एग्जाम्पल दिया था कि दोनों ही को एक ही डेडलाइन मिली है और एक स्ट्रेस में हो रहा है और दूसरा जो है वो स्मूथली जा रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि हमें भी विदाउट स्ट्रेस ही सारी चीजें डूइंग में लेकर आना है। एंड दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट एक्सेप्टेंस। और आज का जो मॉर्निंग मंत्रा था, एंड थैंक यू कि एट द नाइट ही पता चल गया कि एक्सेप्टेंस करना है। तो अमृत वेला योग के बाद भी उस वीडियो को एक बार अगेन लिसन किया, और लेकिन बट देयर आर सो मैनी एस्पेक्ट्स के, हर चीज में सेंटर से आने के बाद हर चीज में देखा कि आई हैव टू एक्सेप्ट द पर्सन टू पर्सन। कुछ मेरे अकॉर्डिंग नहीं है तो आई हैव टू पीसफुल एंड मुझे उस अकॉर्डिंगली कर देना है विदाउट सेइंग, विदाउट डिस्टर्बिंग माई सेल्फ। और थोड़ा सा स्टार्टिंग में आया भी था, बट आई टेक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड उसको मैंने दृष्टि दिया एंड आई एम अ पीसफुल सोल, मैं बहुत शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ, और उसको ड्रिंक करा। देन I reduce my stress and anger today. And very important thing, I accept whatever is happening, people or situations will be their way. I remain calm and influence them to change. कि मुझे एक्सेप्ट करते हुए ही चलना है और अभी भी विद स्माइलिंग के साथ साथ में स्माइल भी करते हुए जाना है, क्योंकि कल का स्माइल था। तो दोनों चीजें लेते हुए आज नाइट तक ये टेक अवे रहेगा। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू सो मच, दैट्स वंडरफुल। हाँ, दिस इज अ गुड थिंग कि जो पहले के भी डेज के जो टास्क थे वो साथ में कंटिन्यू रखना है। दैट्स रियली गुड। थैंक यू सो मच। हाँ जी, ओके रोहिणी सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति सिस्टर। आज का जो मेरा टेक अवे है वो, एक तो पहले वो फॉर्मूला जो शिवानी दीदी ने बताया कि स्ट्रेस इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। तो प्रेशर मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स, और रेजिलियंस का मतलब कि अपना इनर स्ट्रेंथ। तो जो डिनोमिनेटर है रेजिलियंस, वो जितना बढ़ेगा उतना ही हमें आंसर, मतलब नेग्लिजिबल, स्ट्रेस जो है नेग्लिजिबल होता जाएगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो और वो जो डिनोमिनेटर है रेजिलियंस, इनर स्ट्रेंथ, वो बढ़ाने के लिए जो नेक्स्ट उन्होंने जो 7 स्टेप्स दिए, तो वो भी बहुत अच्छे हैं। तो
उसमें एक जो है ट्रांसेंड इल्यूजन्स अबाउट योरसेल्फ, उसमें हम दिन भर में बहुत अटक जाते हैं कि मतलब हमारे जो रोल्स है और पोजीशंस है, अचीवमेंट्स है, हम उनके पीछे जो भागते रहते हैं और उन्हें पकड़ के हम रखना चाहते हैं। तो वैसे जो दिन भर के भी जो हमारे रोल्स है, जैसे एज अ मदर या फिर जो घर में हम है, बाई आ गई, वो अपने जैसे बिहेव करने लगी, खुद के जैसे बिहेव करने लगी, मतलब कुछ सुनती नहीं है। तो ये भी हो जाता है कि अरे ये मेरा घर है और ये ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। तो अभी मैं रोज यहाँ पे बैठती हूँ 3 बजे, मैं बच्ची को लेकर आती हूँ, मेरी बेटी को, और फिर उसे मुंह हाथ धोने के लिए भेजती हूँ और मैं यहाँ पे बैठती हूँ आके। तो उसके बाद जो उनका डिस्टरबेंस चलता है दोनों का, बच्ची का और उससे छोटा बेटा है, तो मतलब बार बार कुछ ना कुछ मांगने आ जाते हैं, समथिंग कुछ तो कुछ बताने Right. आते हैं, कुछ तो कुछ पूछते हैं। तो डिस्टरबेंस ज्यादा हो जाता है, धीरे धीरे मेरा पारा रहता है। सो ये अभी दिन भर का एक मतलब मेरे लिए एक्सेप्टेंस, आज का जो है वो एक्सेप्टेंस, और ये जो इल्यूजन्स है हमारे बारे में जो हम पकड़ के बैठते, तो उस वो सब मतलब करना बहुत ही एक स्ट्रेसफुल जैसा हो जाता है। धीरे धीरे मैं वो पारा चढ़ ही जाता है मेरा। तो मैं कोशिश करती हूँ कि बाद में ही सही कि नो आई एम अ प्योर सोल, क्योंकि हम जब छोटे थे तो जो भी थे मेरे आसपास वो मेरे मुझसे बड़े ही थे, तो उस वक्त ये आसान था, मेरा कोई लेबल नहीं था, कोई पोजीशन नहीं था। तो इस उस वक्त ये बहुत आसान था कि आई एम अ प्योर सोल, मतलब हम अपने आप को बहुत प्यूरिटी में ही रखते थे। तो अब जब इस एज में आए तो मतलब मैं थोड़ी बड़ी हूँ, हो गई हूँ, जैसे मतलब बच्चे आ गए हैं, तो अभी हमारे अंडर काम करने के लिए लोग आते हैं, तो मतलब हम नो वो पोजीशन को पकड़ के बैठ जाते हैं, तो ये थोड़ा स्ट्रेसफुल हो जाता है। ये प्योर सोल वाली बात और उन्हें भी प्योर सोल समझने वाली बात कई बार ऐसे बाद में आ जाती है, तो उस पर भी मुझे काम करना है। तो ये मेरा आज का टेक अवे है। Thank you so थैंक much, sister. हाँ जी, इट्स अ जर्नी, बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, और राइट कि कुछ ना कुछ वो ट्रिगर्स होते ही रहते हैं, बट वही कॉन्स्टेंटली अपने आप को, इट्स एन एवरीडे थिंग, अपने आप को एफर्मेशन देना, जो आप ये होमवर्क कर रहे हैं, रीडिंग सेशन, टेक अवेज लिखते हैं सब, दैट इज सो नाइस टू सी, सब जब लिखते हैं, तो ऑल दिस रियली हेल्प्स इन यू नो अपने आप को इम्प्रूव करने में एंड मेकिंग योरसेल्फ बेटर. जी। ओके, जी मैम। थैंक यू सो मच थैंक सिस्टर. यू। हाँ जी. ओके, रितिका सिस्टर. हाँ जी. Om Shanti. ओम शांति. Yeah, my today takeaway is सिस्टर शिवानी ने बहुत अच्छा बताया कि स्ट्रेस जो है वो एक स्टेटस सिंबल बन गया है आज के टाइम में. अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी टुडे हैज टू मेनी पीपल competing to see who is more stressed. आजकल ये हर कोई देखना चाहता है ना कि कौन ज्यादा स्ट्रेस है, कौन ज्यादा काम कर रहा है, उसकी लाइफ में कितना स्ट्रेस है. हर कोई यही सोचता है कि मेरी लाइफ में ही ज्यादा स्ट्रेस है. और सेकंड, सिस्टर ने बहुत अच्छा बताया स्ट्रेस सिस्टर. ओह, आई थिंक उनका. हाँ जी. ओके, आई थिंक शी लॉस्ट हर कनेक्शन. रुचि सिस्टर. हाँ जी. ओम शांति सिस्टर. ओम शांति सिस्टर. आज जैसे शिवानी दीदी ने जो एक फॉर्मूला दिया है, दैट इज फर्स्ट टेक अवे, स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर ओवर रिसाइलेंस. एंड जिसमें अगर प्रेशर इज एक्सटर्नल सिचुएशन and our inner strength or inner power to face those pressure is our resilience. So more the resilience, less will be the stress. Moreover, she has told that resilience is like immunity of the soul. So we have to work upon
building our immunity. It is like, she also said that it is like working on a muscle, जिसकी स्ट्रेंथ हमें बढ़ानी पड़ती है, रोज रोज उसको एक्सरसाइज को करना पड़ता है, तभी वो हमारी स्ट्रेंथ जो है मसल की बढ़ती है. ऐसे ही रिसाइलेंस पे भी वी नीड टू बिल्ड इट सिस्टमैटिकली, डेली, नॉट वंस अ वीक एंड नॉट ओनली व्हेन टाइम परमिट्स. क्योंकि जब जरूरत होती है उस समय ही अगर हम उस शक्ति को बुलाने की कोशिश करेंगे तो वो काम में नहीं आएगी. उसके लिए हम उन शक्तियों की प्रैक्टिस हमें पहले से ही करनी पड़ेगी. तो ये एक बहुत आज के टाइम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, जो कि मुझे लगता है कि सभी को सिखा, मतलब इवन स्कूल्स में भी हमें बच्चों को इसके बारे में बताना चाहिए. वो तभी बता पाएंगे जब हम खुद इसको प्रैक्टिस करके अप्लाई करेंगे. एंड द नेक्स्ट वन इज फोकस ऑन परफेक्टिंग योर ओन परफॉर्मेंस. तो हम जैसे बाबा भी कहते हैं कि एक ड्रामा है और ड्रामा में सभी एक्टर्स अपना रोल प्ले कर रहे हैं, तो अगर एक एक्टर दूसरे एक्टर के रोल में इंटरफियर करने लग जाएगा, वो ड्रामा ही हमें अजीब सा लगेगा. इट विल नॉट बी सो, मतलब हमें लगेगा शायद एक्टर्स अपना पार्ट भूल गए हैं. तो ऐसे ही ये भी जो है कि यहाँ पे भी हमें अपने स्टाइल, अपनी पर्सनालिटी जो है वो सब जगह बिखेरनी है, कि वो ड्रामा में वो हमारा पार्ट हमें सबसे बेस्ट लगे, उसके लिए हमें वर्क करना है. And all the 7 steps are very important, all the affirmations, we'll practice those. And today's homework is also very good. The acceptance सुबह से ही पढ़ के और उसके बाद उसको अप्लाई किया है और बहुत फायदा होता है. कहीं कई जगह पे लग रहा था कि आज नहीं, गुस्सा करना पड़े. I recalled कि नहीं, आज का होमवर्क तो acceptance है. Then again we got back to the same. So thank you so much. That's all. Thank you so much. It's inspiring to see कि आप इतना follow कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज भी सब इतना देख रहे हैं. एंड थैंक यू. थैंक यू सो मच सिस्टर. रितिका सिस्टर, हाँ जी, कट हो गया था आपका. या सिस्टर, कट हो गया था, एक्चुअली नेटवर्क चला गया था. हाँ. हाँ जी. Since today my second takeaway was we should write our story and not theirs. मतलब हम अपने आप को ही सिर्फ देखें, दुनिया को देखने की जरूरत नहीं है. We should accept, as today our homework is acceptance. तो आज टॉपिक भी इसमें भी यही आ गया कि acceptance, we should make it natural. सब कुछ accept करना है. And we should use our words very wisely. We should speak less, speak softly and speak sweetly. जैसे बाबा कहते हैं कि कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो. And we should flip our negative labels. कि we should not uh, act according to the people look at us, कि हम कैसे दिख रहे हैं, कैसे हैं, उनके labels के accordingly हमें work करना. I label myself with only and only positive words. I'm aware that my labels manifest my destiny. And the next takeaway is that I should listen to my intuitions. कि inner voice जो होती है वो हमारी सही होती है. कभी भी हमें कुछ चीज के लिए भी डिसाइड करना है तो we should first listen to our intuition, and because our intuition knows what is right for us. And last is last line is very, very impressive of this chapter. Remember that shifting to a stress-free life is easily achievable because it depends only on one person, yourself. हम अपने ऊपर ही वर्क करेंगे तभी स्ट्रेसफुल लाइफ हम जी सकते हैं. और we should also remember that I am a soul, I am a peace, I am love, I am power. ये affirmations बहुत अच्छी लगी. इसको अगर हम अप्लाई करें, सोल कॉन्शियसनेस स्टेज पे रहें, तो जैसे बाबा ने कहा, आज भी कहा है कि देही अभिमानी रहना है. तो it will help a lot. Thank you, sister. Thank you so much sister. शशि सिस्टर, मैंने देखा था हैंड रेस. Shanti sister. I'm traveling, so अच्छा, you're traveling. Okay.
Okay, but that's I it. can share one thing. Hanji, sure. My takeaway is that like Sister Shivani told, all the powers are within yourself only. You are the generator of yourself, the destroyer also. So we should think for uplifting our soul by enlightenment, by focusing on our self enlightenment, inner voice, and we should also listen our inner voice also only. What is going outside and surrounding doesn't matter. The more matter is what is going within yourself. And the second one for living stress-free life all depends on you only. Your the way you think and the work you do on yourself by achieving all the positives affirmation by doing like learning out and all that. That is the takeaways. Thank There are you. more also, but Thank हाँ जी कोई बात नहीं. Thank you, sister, for sharing. thank you. Om Shanti. Om Shanti. Thank you so much. Okay, Hanji. Okay, all right. I think everyone is shared. So take away. So the homework for today is going to write the skills to increase your resilience अपने words में according to your understanding. We'll post it in the group as well. And also जो acceptance का है उसका भी कैसा experience था, कितना time आप कर पाए नहीं कर पाए, everything just note it down. So that's wonderful. All right. Okay, so we share the homework as well. Okay, thank you so much everyone for joining, and we'll see you tomorrow. And I'll just play a song now. So thank you. Om Shanti.
भी जैसे एक मीत है, जिंदगी की यही रीत है, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। Thank you everyone for joining. Shanti.